नमस्कार सर। नमस्कार 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 नमस्कार। आज हम लोग इमरजेंसी प्रोविजंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में है और 352 से 360 के अंदर में आता है। और बहुत ये इम्पोर्टेंट पार्ट है सर। बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। अगर जो आज की जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, शायद उनको याद नहीं होगा। इसको बहुत बुरी तरीके से इस्तेमाल किया गया था। इंदिरा जी ने बहुत अपनी गद्दी को बचाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था उनको रायबरेली की सीट से अनसीट कर दिया था जगमोहन लाल सिन्हा ने। तो उसके चक्कर में इसका प्रयोग हुआ था। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, अपने दोस्तों यारों के बीच में इसको थोड़ा सा सर्कुलेट करिए। कोशिश करेंगे हम जितना अच्छा हो सके उतना वो करते हैं, लेकिन यही है कि हमारा भी टाइम कांस्टेंट है, 1 घंटे से ऊपर हम स्ट्रीम को कर नहीं सकते हैं। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग इसको ध्यान से देखें। मैं शेयर करने जा रहा हूँ, एक आर्टिकल है। जी सर, जी सर। और आई थिंक जितने भी मैंने आर्टिकल देखे से उसमें सबसे अच्छा लगा था, और भी अच्छे हो सकते हैं, जितनी मेरी नज़र पड़ी उसमें तो मैंने छांटा था कि ये सबसे अच्छा है। तो देखेंगे क्या बोलते हैं कि ये वही अपना लीगल सर्विस वालों का है ये। जी जी ये आ गई सर। ये है Emergency निधि provisions. यादव ने लिखा है इसको। जी जी जी। The emergency provisions are contained in part 18 of the Indian Constitution from Article 352 to 360. These provisions enable the central government to satisfy any abnormal situation effectively. The central government becomes all-powerful during the emergency period and the states go under control of the union. The rationality behind the incorporation of these provisions of the Indian Constitution is to protect the sovereignty, unity, integrity and security of the nation, the democratic political system and the Constitution. In this context, इसके Dr. एक B.R. मिनट Ambedkar. दादा, ये जो है इमरजेंसी प्रोविजन, ये उठाए गए थे जर्मनी से। इसका हम लोगों ने देखा था ना, जर्मनी से उठाया गया है। जी जी जी। हाँ, but in this In context, this context, Dr. B.R. Ambedkar observed in the Constituent Assembly that all federal systems are placed within a tight mold of federalism consisting America. No matter what are the consequences, it cannot change its form and shape. On the other hand, the Constitution of India can be both unitary as well as federal as per the situation. In normal times, it is framed to work as a federal system, but in times of emergency, the unitary system prevails. so that is the basic difference between Indian Constitution and American Constitution. American Constitution is always federal, whereas Indian Constitution at times becomes unitary also, though it is federal, but at times during emergency it becomes unitary. There are three types of emergencies under the Constitution of India. One, national emergency due to war, external aggressions or armed rebellion, Article 352. State emergency, two, due to the failure of constitutional machinery in states, that is popularly known as President's Rule, Article 356. Three, financial emergency, due to a स्टेट threat. गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट को जब डिसमिस करते हैं तो फिर 356 में करते हैं, और प्रेसिडेंट रूल लगा करके वहां पर उसको जो गवर्नमेंट होती है उसको हटा देते हैं। और ये प्रेसिडेंट रूल है, 6 महीने के लिए रहता है। उसके बाद में अगर इसको एक्सटेंड करना है तो पार्लियामेंट इसको एक्सटेंड करती है, नहीं तो प्रेसिडेंट को हटाना पड़ता है। G. Then financial emergency, due to a threat to the financial constancy or credibility of India, Article 360. Then we come to national emergency, Article 352. This emergency provides that if the President is satisfied that a grave emergency exists whereby the safety of India or any part of India is threatened, either by war or external aggression or armed rebellion, he may make a proclamation of emergency in respect of the whole of India or any part of it, as may be specified in the proclamation. A proclamation of emergency can be made even before the actual occurrence
if the president is satisfied that there is imminent danger of war or external aggression or armed rebellion. The actual occurrence of events mentioned in Article 352 is not essential. An imminent danger of war or external aggression or armed rebellion is adequate for the proclamation of emergency. So, imminent danger is the key word of war, external aggression, or armed rebellion. So this is anticipatory also, in Hmm. anticipation. Hmm. और वहीं पर आता है जबरदस्ती कि ठीक है, नहीं हो रहा तो भी Thus, वो कर जी दो। जी इसीलिए लिख रहा thus actual occurrence of events mentioned in Article 352 is not essential. Apprehension of war, external aggression, or internal disturbance is sufficient. The President shall not issue a proclamation without consulting the Union Cabinet, that is, the Council of Ministers and the Prime Minister. Such a proclamation may be issued after it has been communicated to them in writing. This means that the emergency will be declared only on the conformity of the Cabinet, not merely on the advice of the Prime Minister. Then comes the famous case of Minerva Mills versus Union of India. Now, here they are saying that the court, meaning the Supreme Court, held that there is no bar of limitation to judicial review of the validity of a proclamation of emergency issued by the President under Article 352, Clause 1. This proclamation of emergency can be challenged in the court on the basis of mala fide or the declaration that was that it was wholly extraneous or irrelevant, based on wholly extraneous or irrelevant facts, or is absurd or perverse. However, the word satisfaction used in Article 352 does not mean the personal satisfaction of the President, but it is the satisfaction of the Cabinet. The power to declare emergency can be exercised by the President only on the recommendation of the Council of Ministers. So, the recommendation of the Council of Ministers is necessary. कैबिनेट की बात कर रहा है, अरे प्राइम मिनिस्टर की बात करो ना यार, कुछ भी बोलता है लोग। अच्छा, एनीवे। Cabinet नहीं है, the Council of Ministers, हाँ, सॉरी, especially the काउंसिल ऑफ Prime Minister. मिनिस्टर। जो इमरजेंसी लास्ट टाइम लगी थी, देयर वाज नो कैबिनेट मीटिंग ना, तो No, no, कहते, no. हाँ, वो वैसे ही लगा दिया था उसको। फिर क्या बोल प्राइम रहे हैं? मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी बोली तो बाकी लोग हाँ ही बोलते ना. ओके। Parliamentary approval and duration. Prior to the 44th Amendment Act of 1978, a proclamation of emergency could remain in force for 2 months in the first instance. But once approved by Parliament, the emergency could remain in force for an indefinite period of time as long as the executive wanted it to continue. The 44th Amendment has curtailed the power of the executive to extend the operation of emergency unnecessarily. After the 44th Amendment, a दादा, ये गलत proclamation नहीं of, लिख रहे हैं? सर इसीलिए मैं यहाँ से पढ़ना चाह रहा था अपना आप पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशन से. आप पढ़ो, ये गलत लिख रहे हैं वो। 352 बोल रहा है, if the president is satisfied हाँ, that a grave emergency exists whereby the security of India or any part of the territory thereof is threatened, whether by war or external aggression or armed rebellion, he may by proclamation make a declaration to that effect in respect of the whole of India or such part of the territory thereof as may be specified in the proclamation. Explanation. A proclamation of emergency declaring that the security of India or any part of the territory thereof is threatened by war or by external aggression or by armed rebellion may be made before the actual occurrence of war or of any such aggression or rebellion if the President is satisfied that there is imminent danger thereof. A proclamation issued under Clause 1 may be varied or revoked by a subsequent proclamation. करेक्ट। ये सब सब्स्टिट्यूशन है. अच्छा, the president shall not issue a proclamation under clause 1 or a proclamation varying such proclamation unless the decision of the union cabinet, that is to say the council consisting of the prime minister and other ministers of cabinet rank appointed under article 75, feel that such a proclamation may be issued, and that has to be communicated to the president in writing. Every proclamation issued under this article shall be laid before each house of the parliament and shall, except
where it is a proclamation revoking a previous proclamation, cease to operate at the expiration of 1 month, unless before the expiration of that period it has been approved by resolutions of both houses of parliament, provided that if any such proclamation, not being a proclamation revoking a previous proclamation, यहाँ थोड़ा सा distinction है, if any such proclamation, but not being a proclamation revoking a previous proclamation, is issued at a time when the House of the People has been dissolved, or the dissolution of the House of the People takes place during the period of 1 month referred to in this clause, and if a resolution approving the proclamation has been passed by the Council of States, but no resolution with respect to such proclamation has been passed by the House of the People before expiration of that period, that means the period of 1 month, जो बोल रहा था, the proclamation shall cease to operate at the expiration of 30 days from the date on which the House of the People first sits after its reconstitution, unless before the expiration of that period of 30 days a resolution approving the proclamation has also been passed by the House of the People. नहीं बैठ रहा तो उसके विषय में यहाँ बोल रहा है कि it shall cease to operate at the expiration of 30 days from the date on which the House of the People first sits after its reconstitution. ये 44th अमेंडमेंट में हुआ ना ये सब? लिख नहीं रहा है, बट ये है सब्स्टिट्यूटेड ना, ये इधर पढ़ो ना, इस पे लिखा हुआ इधर है है, ये इधर है ये पढ़ो, हाँ ये देखो जी. For the further continuance of emergency beyond the period of 6 months बोल रहे हैं, approval by the parliament would be required every 6 months. यहाँ तो 6 months का बात ही नहीं कर रहा है मेरे किताब में, 1 month बोल रहा है. हाँ आगे पढ़ो. If the proclamation हाँ is हाँ, a issued, proclamation so approved, अच्छा, if it's approved, correct, a proclamation so approved shall, unless revoked, cease to operate on the expiration of period of 6 months from the date of passing of the second of the resolution approving the proclamation under clause 4. थोड़ा सा पेचीदा है. ये थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिखा है इसने. लिखा क्या लिखा? अप्रूवल जी. बाय पार्लियामेंट वुड बी रिक्वायर्ड एवरी 6 months if the proclamation is issued at the time when the Lok Sabha has been dissolved or the resolution of the Lok Sabha takes place during the period of 6 months without approving the proclamation, then the proclamation remains until 30 days from the first sitting of the Lok Sabha after its reconstruction. reconstitution और reconstruction. मतलब अगर इलेक्शन रिजॉल्व हो जाए और इलेक्शन जो है 6 महीने के बाद में या 7 महीने बाद में हो, तो दैट 6 month clause is gone. जी. Then it will remain in force till the Only for a Lok Sabha month. is constituted again. है ना? ऐसा है ना? हाँ Until हाँ remain until हाँ 30 days from the first sitting. from the Okay. first sitting of the Lok Sabha after its reconstitution. Constitution हो जाता है, मतलब उसके मैं बाद में 30 डेज तक रह सकती है. उसके जी मतलब जी 30 जी डेज के अंदर न्यू अगर लोकसभा बनती है फिर तो से 30 डेज के उसको अंदर अप्रूव, इसको रेटिफाई करना पड़ेगा. फिर ऐसा हाँ है. फिर से अप्रूव करना पड़ेगा. A revocation of national emergency. A proclamation of emergency may be revoked by the president at any time by a subsequent proclamation. That proclamation does not require any parliamentary approval. The president shall revoke a proclamation if the Lok Sabha passes a resolution disapproving it or disapproving its continuance, where a notice in writing signed by not less than 1/10 of the total number of members of the Lok Sabha. 1/10 of the total number of Lok Sabha. The notice should be given to the To the speaker if the speaker lower house if is the in lower house is session, in session, or to and the to the president if president the if it is not in house session. is Okay. not in session. Shall be held. And if फिर क्या है? uh, Special yeah, sitting of the Lok Sabha shall be held. Okay. अच्छा. within 14 days from the date on which such notice is received by the speaker or by the president for the purpose of considering the resolution. A resolution of disapproval is different from a resolution approving the continuance of a proclamation the following ways. Two ways. The first one is required to be passed by the Lok Sabha only, while the second one needs to be passed by both houses of parliament. So By disapproval में being drastic and wide-ranging effect on the political situation, the consequences can be grouped into three: effect on the center, state elections, state election, okay; effect on the life of Lok Sabha and state assemblies; effect on the fundamental right, okay. fundamental rights. Effect on center-state relations, where a proclamation of emergency is in force. Sorry.
Where a proclamation of emergency is enforced, the center-state relations undergo basic changes. This is headed under executive. During a national emergency, the executive power of the center extends to directing any state regarding the way in which its executive power is to be exercised. In normal times, the union can give executive directions to a state only on certain specified matters. Thus, the state government is brought under the complete control of the center, though it is not suspended. Legislative. During a national कितनी emergency, the पुअर parliament. पुअर ड्राफ्टिंग है ना इस आर्टिकल की, कितने पुअर ड्राफ्टिंग है। हाँ, द नहीं स्टेट तो गवर्नमेंट्स को गवर्नमेंट लिख करके फिर नहीं आर्मी ना, वो करेंगे। पहले ऊपर भी मैं देखा हूँ कहीं इनकम्प्लीट सेंटेंसेस है, इसीलिए गड़बड़ लग रहा था मुझे, इसलिए मैं किताब देख रहा था। तो क्या किया जाए, अब अंग्रेजी सबका मतलब उतना तो अच्छी होती नहीं ड्यूरिंग अ है। नेशनल इमरजेंसी द पार्लियामेंट इज पावर टू मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट मैटर मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। ठीक है, हाँ वो तो स्टेट की पावर ले लेता है ना सेंटर अपने आप। जी, दो द though the लेजिस्लेटिव पावर ऑफ legislative स्टेट power of a state गवर्नमेंट। legislature is not suspended, it becomes subject to the overriding power of the parliament. The law made by the parliament on state matters will not be functioning after the emergency ceases to operate. सो A मतलब temporary ये है period. कि स्टेट भी लॉ बना सकता है और सेंटर भी बना सकता है, बट जो सेंटर बनाएगा दैट विल बी ओवरराइडिंग ऑन द स्टेट लॉ। हाँ, state दैट। laws. हाँ, ओके। Financial. While a proclamation of national emergency is in process, the president can either reduce or cancel the transfer of finances from center to the state. Every such order of the president has to be laid before both houses of the parliament. Effect on the life of Lok Sabha and State Assembly. Where a proclamation of emergency is in process, the life of Lok Sabha is also extended beyond its normal term, 5 years, by a law of Parliament for 1 year at a time. However, this extension cannot continue beyond a period of 6 months after the emergency has ceased to operate. Similarly, the Parliament may extend the normal tenure of a state legislative assembly 5 years by 1 year each time during a national emergency, subject to a minimum period of 6 months after the emergency has ceased to operate. सो देयर इज नो आउटर लिमिट। 1 ईयर एक्सटेंड करते रहो करते रहो करते रहो जब तक इमरजेंसी रहेगी। इट्स लाइक दैट। ये चेक कर लेता हूँ सर। इसका वर्डिंग तो वही बोल रहा है ये। एक सेकंड सर, मैं बता देता हूँ। ये कौन सा आर्टिकल बता रहा है इसका? 352 का ही है ना, उसमें 352 में हाँ, कुछ। हाँ, क्या बोल रहे एक्सटेंशन है एक्सटेंशन। यहाँ तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। रेजोल्यूशन में भी पास है। नहीं नहीं, आप इसकी वर्डिंग पढ़ो क्या बोल रहा है। अब ये तो सिमिलरली द पार्लियामेंट में एक्सटेंड द नॉर्मल टेन्योर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज So बाय ईयर the tenure is 5 years by 1 year each time. बाय 1 ईयर ईच टाइम। मतलब 5 साल पूरा हो गया, उसके बाद में साल भर पढ़ाएगा, जो साल भर खत्म होने वाला फिर साल भर लेकिन के लिए पढ़ा देगा। यहाँ तो मेरे यहाँ अंटिल। ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा सर। अभी अच्छा, तक तो ये मेरे यहाँ नजर नहीं आ रहा। ड्यूरिंग आर्टिकल के अंडर ड्यूरिंग नेशनल इज सब्जेक्ट टू मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर द इमरजेंसी हैज सीज्ड टू ऑपरेट। ठीक है नहीं, उसको। लेकिन ये रेफरेंस देना चाहिए था ना, कहाँ से मिला ये? कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये नहीं है, कहीं नजर नहीं आ रहा मुझे। ये एक महीना जो एक्सटेंशन, 1 ईयर जो बोल रहे हैं एक्सटेंशन, 30 days का बात है, लेकिन वो 1 ईयर का तो ऐसा कुछ एक्सटेंशन कहीं नजर नहीं आ रहा सर। पता नहीं कहाँ से ये लिया गया। मैं ढूंढता हूँ, तो आगे पढ़ते रहो, खत्म करते जी, effect on fundamental rights. This is more important. Article 358 and 359, Articles 358 and 359 set out the effect of a national emergency on the fundamental rights. Article 358 deals with the suspension of the elemental rights guaranteed by Article 19, while Article 359 deals with the suspension of other fundamental rights except those guaranteed by Article 20 and 21. Suspension of fundamental rights.
According to Article 358, when the proclamation of national emergency is formed, the 6 fundamental rights under Article 19 are automatically suspended. No separate order for their suspension is required. The 44th Amendment Act of 1978 restricted the scope of Article 358, providing that the 6 fundamental rights under Article 19 will be suspended only if the national emergency is asserted on the ground of war or external aggression and not on the ground of armed rebellion. दादा एक मिनट, जी सर. ये विकिपीडिया बोल रहा है ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द टर्म ऑफ द लोकसभा कैन बी सक्सेसफुली एक्सटेंडेड बाय इंटरवल ऑफ अप टू 1 ईयर बट नॉट बियॉन्ड 6 मंथ आफ्टर द स्टेट ऑफ, हाँ तो मतलब यही है, 1 साल तक बढ़ाता रहता है, लेकिन अगर इमरजेंसी हटा दिया तो 6 महीने बढ़ा सकते हैं उसके बाद, इतना ही हो सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों नहीं है? इसके नीचे मतलब 352 का 6 देखो उधर किसे 6 में 6 में फॉर द कुछ है, पर्पस, हाँ 6 करके है, फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉजेस 4 and 5 a resolution may be passed by either house of the parliament only by a majority of the total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting. अच्छा, और उसके आगे भी है, 7 भी है, नहीं कुछ नहीं, हाँ 7 है, 8 है, 8A भी है, देखो 9 है. तो पढ़ो तो 7 क्या लिखा है? 7. Notwithstanding anything contained in the foregoing clauses, the President shall revoke a proclamation issued under Clause 1 or a proclamation varying such proclamation if the House of the People passes a resolution disapproving, or as the case may be, disapproving the continuance in force of such proclamation. Khatam. 8 8. Where a notice in writing signed by not less than 1/10. 9 9. The power conferred on the President in this article shall include the power to issue different proclamations. 10 करके 10 तो नहीं है, 353 पे आ गया फिर. अच्छा ठीक है, तो फिर क्या बोल रहा है, वो टाइटल क्या है उसका? 353 effect of proclamation of emergency, जो मैं पढ़ रहा था. अच्छा ठीक है, और फिर 4 354 बोल application of provisions relating to distribution of revenues while a proclamation of emergency is in operation. Okay. 5 355 355 बोला duty of the union to protect states against external aggression and internal disturbance. अच्छा, वो तो अभी बात कर रहे हैं 355 लगाने की. अब ये कहाँ से लेकर के आया है मालूम नहीं है इसको, ये थोड़ा चेक करना पड़ेगा सर, इसीलिए जब इनको लिखना चाहिए था कि कहाँ से लिए हैं, मतलब जिस तरह दिया गया है तो टैली नहीं कर रहा है इसके साथ. मैं इसको थोड़ा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में देखता हूँ क्या बोल रहा है. द प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड दैट अ ग्रेव इमरजेंसी, ठीक है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, प्रोक्लेमेशन अंडर सो एंड सो मे बी वेरिड और रिवोक्ड. President shall not issue a proclamation, हो गया. Every proclamation issued under this article shall be laid before the House, provided that if any proclamation not being proclamation revoking a provision of proclamation, a proclamation so approved shall, unless revoked, cease to operate on the expiry of 6 months from the date of this passing of the second resolution, provided that if and so often a resolution approving the continuation force of such proclamation is passed by both houses of the Parliament, the proclamation shall, unless revoked, continue in the force for further period of 6 months from this, provided further that if the dissolution of the House of this year, हो गया ठीक है. 6 is for the purposes of this resolution continuation House of the first proclamation varying however where notice is writing, तो speaker रूप से हमने पढ़ लिया. स्पेशल मीटिंग हो गया. द पावर कन्फर्ड ऑन द प्रेसिडेंट बाय दिस आर्टिकल शैल द पावर ऑफ इशू डिफरेंट. हाँ तो 9 में खत्म हो गया ना. इसके बाद क्या बोल रहा है, खत्म. While a proclamation is in operation, then notwithstanding anything contained in this, it shall extend to the giving direction of the state and the power of parliament to make laws. ठीक है. Shall also extend to the state. 354 का one president, while a proclamation of this shall for such period beyond the expiration of financial year. ये तो उसकी बात कर रहा है. Every order it shall be the duty of the union to protect. नहीं है पता नहीं क्या लिख रहा है. नहीं है सर, ये तो मैं बोल रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से घुसा देता है तो. हाँ ये ठीक है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स वगैरह ये ठीक है, ये सही लिखा गया. 358 का पढ़ दिया मैं सर. नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म रिबेलियन, मतलब आर्म रिबेलियन होने से
the emergency asserted on the ground of armed rebellion होने से ये लागू नहीं होगा 358 इसका 356 restriction पढ़ो, डाला गया है। हाँ, प्रेसिडेंट रूल। it says that the president can act on the report of the governor or otherwise दैट यहाँ सिचुएशन गड़बड़ है रीजन व्हिच द स्टेट नहीं गवर्नमेंट इज अनेबल टू परफॉर्म मैं इट्स मैं जॉब। पढ़ता हूँ सर यहाँ से ये 356 ना provision. If the president, on receipt of a report from the governor of a state or otherwise, is satisfied that a situation has arisen in which the government of a state cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution, the president may by proclamation assume to himself all or any of the functions of the government of the state, or all of any of the powers vested in or exercisable by the governor or any body or authority in the state other than the legislature of the state. बी में बोल रहा है द प्रेसिडेंट में बाय प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर दैट द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट shall be exercisable by or under the authority of parliament. C. The president may make such incidental or consequential provisions as appear to the president to be necessary or desirable for giving effect to the objects of the proclamation, including provisions for suspending in whole or in part the operation of any provisions of the Constitution relating to any body or authority in the state, provided nothing in this clause shall authorize the President to assume to himself any of the powers vested in or exercisable by a high court, or to suspend in whole or in part the operation of any provision of this Constitution relating to high courts. Any such proclamation may be revoked or varied by a subsequent proclamation. 3. अच्छा, Every proclamation made under this article shall be laid before each house of the parliament and shall, except where it is a proclamation revoking a previous proclamation, cease to operate at the expiration of 2 months, unless before the expiration of that period it has been approved by resolutions of both houses of the parliament. ये ठीक है सर. Provided that if such proclamation, not being a proclamation revoking a previous proclamation, is issued at a time when the House of the People is dissolved, or the dissolution of the House of the People takes place during the period of 2 months referred to in this clause, and if a resolution approving the proclamation has been passed by the Council of States, but no resolution with respect to such proclamation has been passed by the House of the People before the expiration of that period, the proclamation shall cease to operate at the expiration of 30 days from the date on which the House of the People first sits after its reconstitution, unless before the expiration of that period of 30 days, a resolution approving the proclamation has also been passed by the House of the People. ये क्या लिख रहा है इसमें यहाँ पे? ये क्या है भाई? If the proclamation is approved by the parliament, it will remain in operation Proclamations for so 6 months. approved shall, unless revoked, cease to operate on the expiration of a period of 6 months from the date of issuance of such proclamation. ये जो मैंने हाईलाइट किया है इसमें क्या बोल रहा है कि प्रेसिडेंट रूल कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 3 years, ऐसा करके बोल रहा है. यहाँ तो कोई कैप नहीं है यहाँ. अच्छा, प्रोवाइडेड दैट, हाँ ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इफ and so often as a resolution approving the continuance in force of such a proclamation is passed by both houses of the parliament, the proclamation, unless revoked, shall continue in force for a further period of 6 months from the date on which, under this clause, it would otherwise have ceased to operate, but no proclamation shall remain in any case in force for more than 3 years. हाँ ठीक है. तो जम्मू कश्मीर में तो मेरे ख्याल में 4 साल हो गया ना. अच्छा, उसको स्टेट, अच्छा हाँ, वो तो स्टेट को अलग चीज हुआ, एब्रोगेशन हुआ, टेरिटरी बना दिया ना वहां पे. ओके, यूनियन टेरिटरी बना दिया और एब्रोगेशन देयर के इज नो बाद ना. असेंबली एट ऑल. अच्छा, हाँ, नो ये नो ओके.
अभी ये मुंबई केस में प्रेसिडेंट रूल कैसे लगाते हैं, एक मुंबई का केस बहुत इंपॉर्टेंट on, था फिर। जी, on वी शुड 15th नॉट of वी शुड December. नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस। मुंबई का केस है, बस खत्म हो गया, इतना बोल के लग जाते हैं। मुंबई केस में कभी भी होता है तो सुप्रीम कोर्ट मुंबई केस के लेकर के डंडा मार देता है, इसीलिए नरेंद्र मोदी कहीं पर प्रेसिडेंट रूल लगाते नहीं है अभी आजकल। मुंबई जी, केस आगे आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट के बाद बहुत बड़ा हथियार हो रखा है। क्या लिखा है देखो, the main ground on which the government had been dismissed where the chief minister of the state have connection with the organization which had been, ये जो अपना बाबरी मस्जिद गिरी थी ना, हाँ हाँ, उसी का तो तो है। राजस्थान, एमपी और हिमाचल That प्रदेश the की गवर्नमेंट government गिरा दी had थी ना। encouraged the car sevaks to go to Ayodhya. Thus, the हम्म, premise was mere suspicion that they might refuse to enforce the ban. There was no proof that they were not following the directions of the center. हम्म। The dismissal of the governments of Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, and Rajasthan in the wake of the Ayodhya incident of 6th of December 1992 was valid, and the imposition of president's rule in these states was constitutional. सेक्युलरिज्म इज अ बेसिक फीचर, कुछ भी बोलते हैं ये लोग। क्यों पता नहीं कहाँ से उठा उठा के सब ले आता है, सब लिखा हुआ नहीं है। सेक्युलरिज्म इज अ बेसिक फीचर। आगे, इट वाज हेल्ड दैट द मैटर ऑफ रिलीजन इन द स्टेट हैज नो प्ले, क्या मैटर ऑफ रिलीजन इन द रिलीजन, क्या The in state matters has of no religion place, the state has no place। अच्छा, no party can no party. simultaneously be a non-secular party as well as political, कुछ भी। फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये थोड़ा पढ़ दो, 360, ये अच्छा, जरूरी। नॉन सेक्युलर पार्टीज नहीं है और पॉलिटिकल पार्टी दोनों नहीं है, तो क्यों लिखता है ये सब? कुछ भी लिखते हैं लोग यार, शिट। हाँ, इसीलिए इस पे फाइनेंशियल ज्यादा इमरजेंसी पढ़ो। रिलायंस, प्लेसिंग एक टू काम मच करता हूँ रिलायंस मैं, ऑन इसको हटा दी देता हूँ, फाइनेंशियल ये इमरजेंसी। मुझे जम नहीं रहा है, नहीं मैं हटाता हूँ इसको, मैं नहीं पढ़ता इसको, कुछ भी मतलब। इससे यही है अच्छा है ना, कि ज्यादा पढ़े डायरेक्ट लिखे होने का एक कॉन्स्टिट्यूशन नुकसान से। हो जाता है, अपने को गलती पकड़ में आ जाती है कि भाई ये क्या है। तो अगर अपने को कॉन्शियस अलाउ नहीं करता तो उसको पढ़ने का नहीं, मैं तो ये जी सोचता जी। हूँ। इसको देखें क्या बोल रहा है, थोड़ा जिसमें अच्छा लिखा है। ये देखो, नेशनल ये तो मैं इमरजेंसी पढ़ अंडर लिया, आर्टिकल थोड़ा 350। ये पढ़ो हाँ। In 1978, the 44th Amendment of the Constitution of India substituted the words armed rebellion for internal disturbance in Article 352, making the term more specific and less subject to इंटरप्रिटेशन, interpretation. Hmm. The President can declare three types of emergencies: national, state, and इंटरनल financial डिस्टर्बेंस emergency. की जगह उन लोगों ने आर्म रिबेलियन कर दिया है। जी। इंटरनल डिस्टर्बेंस में तो इंदिरा जी ने वही तो यूज किया था, इंटरनल डिस्टर्बेंस यूज किया था इन लोगों ने। हाँ, अब ये इमरजेंसी पढ़ो Origin, तो। Originally, at the beginning, a national emergency could be declared on the basis of external aggression of war and internal disturbance in the whole of India or a part of its territory under Article 352. Such an emergency was declared in India in the 1962 China War, 1971 Pakistan War, and 1975 internal disturbance declared by Fakhruddin Ali Ahmad. बेचारे को बकरा बना दिया बलि का After फखरुद्दीन। the 44th Amendment Act of 1978, national emergency can only be declared on the grounds of external aggression of war, also called external emergency, and on the ground of armed rebellion, also called internal emergency. The President can declare such an emergency only on the basis of a written request by the Cabinet headed by the Prime Minister. Such a proclamation must be laid before both houses of the Parliament, and the state of emergency expires after 1 month unless approved within that time by both houses sitting and voting separately. However, the lower house has been dissolved or dissolution takes place in the state of emergency and the Rajya Sabha approves the state of emergency, the deadline of the Lok Sabha is extended until 30 days after that house is reconstituted. According to Article 352, Clause 6, approval by either house requires a special majority. Those in favor of the motion must be two-thirds of those present and voting, and amount to a majority of the entire membership of that house. A parliamentary resolution extends the state of emergency for up to 6 months, and it can be extended indefinitely by further resolutions in 6 monthly increments. ये देखा, ये आया ना हाँ, बराबर, ये सही है, वही ये बोला। सही है, ये सही है। Because until unless that emergency situation ceases,
इमरजेंसी है, मतलब हाउ कैन इमरजेंसी बी रिवोक्ड? करेक्ट. अभी जैसे यूक्रेन में 1.5 साल से चला आ रहा है, वहां पे लड़ाई चली आ रही है, ऐसा कुछ हो जाए तो ऐसे थोड़ी ना कि इमरजेंसी तुम 6 महीने में हटा दोगे, कोई टाइम पीरियड थोड़ी ना फिक्स करोगे. So during a national emergency, many fundamental rights are suspended. The sixth freedom under the right to freedom are automatically suspended. By contrast, the right to life and personal liberty cannot be suspended, according to the original constitution. In January 21 केसेस में होगा. 1977, during the emergency declared controversially by Indira Gandhi, the government decided to suspend even the right to life and personal liberty by dispensing with habeas corpus. Justice Hansraj Khanna defended the right to life and asked, life is also mentioned in Article 21, and would the government argument extend to it also? The Attorney General observed, even if life was taken away illegally, courts are helpless. ओह, क्या यार. अब जो अटॉर्नी जनरल वो को जो दैट सिखाया इडियट, जाएगा, वो तो इंदिरा गांधी कहने पे काम कर रहा था यार, बाप रे. क्या करेंगे वो? National emergency modifies the quasi-federal system of government to a unitary one by granting Parliament the power to make laws on the 66 subjects of the state list, which contains subjects on which the state government can make laws. Also, all state money bills are referred to the Parliament for its approval. Our financial powers. During an emergency, the term of the Lok Sabha can be successively extended by intervals of up to 1 year, but not beyond 6 months after the state of emergency has been revoked. President rule under Article 356. It has been declared for the first time in the state of Punjab in 1951. अच्छा, ये पढ़ो. It is imposed for an initial period of 6 months and can last for a maximum period of 3 years repeated parliamentary approval every 6 months. ये सही. Every 6 months. The 42nd Amendment Act of 1976 extended the initial time duration of President rule from 6 months to 1 year. Subsequently, the 44th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोल रहा है, सीए. Constitutional Amendment Act 1978 restored the 1 year period back to 6 months. Originally, the 6 months here. Originally, the maximum period of operation of President rule was 3 years. The और ये 3 year देखो, ये period. पुराना मारा है इसने, इसीलिए 3 की बात कर रहा था वो. हाँ. हाँ, तो 3 year period was नहीं, ये बैकग्राउंड नहीं बताने से तो फिर हम लोग तोड़ नहीं पाएंगे. Was divided into 1 year of ordinary period and 2 years of extraordinary period, for which certain conditions were to be fulfilled. However, now unless revoked, its life can be extended by 6 months each time, but in no case beyond 3 years. ये ज़्यादा important है. 6 months each time, but in no case beyond 3 years. If the emergency has been extended for more than 3 years, it can only be done by the Constitution of India, by a constitutional amendment, as had happened in the case of Punjab and Jammu and Kashmir. ये हुआ ना, During ये देखो, इज अ रीजन हो गया. अब यहाँ पे ड्यूरिंग इमरजेंसी द प्रेसिडेंट कैन टेक ओवर द एंटायर वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द गवर्नर administer the state. अच्छा, the legislative assembly can be dissolved or may may remain remain in suspended in animation. suspended animation. The हाँ. Parliament can make laws on the 66 subjects of the state list. All money bills have to be referred to the Parliament for approval. In this occasion, ministers of the state legislature do not perform actions in state. Definitely, how state legislature will not function at all. अच्छा, गवर्नर का पावर भी देखना होगा सर इसमें. बाद में आएंगे. The governor also has powers where there is failure of constitutional machinery. वो 356 में ही आता है ना. हाँ हाँ हाँ. ये पढ़ो, आ जाएगा मालूम है यहाँ पे. Susceptibility to judicial scrutiny of the declaration in compliance of Article 356 is beyond doubt, because powers are conditional upon Article 356 Clause 1. सर वो हटाना पड़ेगा ये. एक मिनट. जी जी जी. एडवर्टीजमेंट ऐड आ जाते हैं बीच में. हाँ जी. The person मतलब
The person is empowered to investigate whether the provision has been met in exercise exists ka in exercise It is of right of important to the debate investigate whether the over nature provision and has degree been. of the judicial. क्या है यार ये? The ये person is गलत लिखा है. It is evident from the choices made in the case of Rajasthan, state of Rajasthan versus Union of India, and the case of Mumbai, that a uniform law cannot apply in all the cases and is bound to differ based on the issue, the essence of the right as well as other way. ये गड़बड़ है सर इस पे ये अंग्रेजी में. कट पेस्ट का However, चक्कर है. मैं हटाता हूँ इसको. क्या यार शिट. कुछ भी कि जब ये यहाँ से वहां से कट पेस्ट करते हैं ना पूरे सेंटेंस की ऐसी तैसी करके रख देते हैं, है ना? नहीं नहीं तो कट पेस्ट तो हम लोग भी करते हैं लेकिन ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है बहुत चीज. ये क्या है इसमें देखें. जून 5 15 अभी का है ये. लीगल विद्या क्या विधिया. हम्म. ये इमरजेंसी प्रोविजन सेफ गार्डिंग दिस. इसमें क्या बोल रहा है अभिषेक यादव. वो नीरा यादव थी. कौन सी थी? और ये भी यादव. सारे का सारे यादव यही कर रहे हैं क्या आजकल? देखते हैं ये थोड़ा सा तो बेटर लग रहा है मुझे. देखेंगे लैंग्वेज क्या मारता है ये. नहीं पढ़ रहा हूँ मैं. आप जब स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं पढ़ते ही जा रहा हूँ. स्टिल बेटर देन द प्रीवियस वंस. These power include the ability to suspend the fundamental right guaranteed at part when the with the exception of certain rights such as right to life and personal liberty. ये सही लिखा है, सही The लिखा है. federal government can also assume control of the state and exercise its authority over its They're functioning. ठीक है. functioning. State emergency. हाँ ये पढ़ो. इसमें आएगा Can and the Article 356, commonly known as President Rule, provides for the imposition of a state emergency if the President is satisfied that the government of a particular state cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution. In such cases, the President assumes control of the state's administration and can dismiss or suspend the state government. देखिए, dismiss और suspend और suspension भी हो सकता है. A state हाँ emergency can be proclaimed either on the report of the governor of the state or on the basis of other information. The state government is dissolved and the president's rule is imposed, enabling the central government to take charge of the state's affairs. The legislative powers of the state are then exercised by the parliament or the president see depending on the दादा circumstances. दादा. Here state government is dissolved means assembly is not dissolved. State No, government no, is no. dissolved. The government, Chief minister and the ministers are not only there. ministers, not हाँ. the assembly. So the house is not dissolved during No, no, president no. rule. ये मालूम पड़ना चाहिए पब्लिक को. हाँ आगे. Article 356 has been a subject. ये पूरा पढ़ लिया था मैं. Article 356 has been a subject of controversy and debate as it involves a delicate balance between federalism and the need for centralized control in exceptional circumstances. The exercise of this power is subject to judicial review, and the Supreme Court has laid down certain guidelines to prevent its misuse. Language is much better compared to the earlier ones. Financial emergency, Article 360. During a financial emergency, the central government assumes control of the financial resources of the country. It can issue directions to the states to observe certain financial principles and take measures necessary to restore financial stability. The President's proclamation of a financial emergency must be approved by both houses of the parliament within 2 months. The declaration of a financial emergency has been rare in Indian history, with it being invoked only once during the balance of payments crisis in 1991. वही जब गोल्ड हमारा जो मॉर्गेज The किया था तब. provision reflects the significance placed on economic stability and the role of the central government in managing financial crises. Sir, एक second, sir. हाँ পরে করলে হবে. হুম. And Articles 353, 354, 355, 357, 358, 359. Articles 353 to 359 provide supplemental provisions related to emergency provisions. Article 353 empowers the President to delegate his functions to any authority during a national emergency. Article 354 specifies that laws made during a national emergency may have retrospective effect and can override inconsistent laws or provisions. Retrospective effect. Article 355.
imposes a duty on the central government to protect Let every viewer state against understand that any law has to be prospective effect, but इमरजेंसी में this जो लॉ case बनाए जाते हैं उनको पीछे से भी लपेट देते हैं. That's why, may have a retrospective but पावर effect. तो दिया ही है ना, बना जी सकता है जी ना. जी हाँ हाँ हाँ. So Article 355 imposes a duty on the central Government to protect every state against external aggression and internal disturbance. Hello? It allows the central government to give direction to the state in this regard. Article 357 empower the president to give financial assistance to state during emergency, and Article 358 enable the president to suspend the enforcement of fundamental right during national emergency. Okay. जी 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 359 is a give particular section that allow the president to suspend the right to move to any court for enforcement of fundamental right during this. However, this suspension does not apply to the right guaranteed under Article 20 and 21. Okay. This is again, ये 20 जो है वो डबल जेपड़ी की बात करता है वहां पर जी कि एक ही केस में है ना. ये देखो लिखा हुआ है जी एक्स जी जी पोस्ट फैक्टो लॉज एंड ex डबल post जेपड़ी. facto laws and double jeopardy. हम्म. Double jeopardy मतलब on the same to punishment cannot be imposed twice on the same offense. हम्म. Over the years, the interpretation and application of emergency provisions have been subject to scrutiny and debate. The Supreme Court of India, as the guardian of the Constitution, has played a crucial role in defining the contours of emergency powers, ensuring the exercise remains within the boundaries set by the Constitution. अब लैंडमार्क केसेस है छोड़ो ना वो ये तो हम सब लोग डिस्कस कर चुके हैं पढ़ते पहले. पढ़ते सब आगे चला जाएगा, बहुत हो जाएगा. नहीं ये ये तो सब किए हैं हम लोग, ये सब हम लोग पहले भोपाल भी किया हम लोगों ने, मुंबई भी आ गया है. पूरा पूरा किए हैं ये सारा. एटीएम जबलपुर, ये हाँ दो ये बार किए क्यों हैं बोल सर. रहे हैं? ये क्या है? एटीएम जबलपुर दो बार क्यों? नहीं दो बार ही था वो. ये है दो दफे सुप्रीम ही आया था कोर्ट. सर. हाँ 76 और देखिए ये है आपका. वही है, सेम है ना. अच्छा वही है. अच्छा मनिका गांधी उल्टी ठीक किया है. है. पीयूसीएल 1997 ये क्या है? सर्टेन प्रोविजन ऑफ प्रिवेंटिव, अच्छा कोटा की बात प्रिवेंशन है. ऑफ कोटा. हाँ कोटा, अच्छा. गुरुजन सिंह विल बी द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस. अच्छा वो तो मान ही लिया था पहले. डीसी वाधावा के प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये डिटेंशन हमारे शुड नॉट बी अ टूल फॉर हैरेसमेंट. हम्म, ये हमारे कस्टम के बॉस थे डीसी जी वधावन. जी जी प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी, बैंक ऑफ कॉमर्स 1947 पुराना है. ये क्या है? बलसारा स्टेट ऑफ बलसारा, एआईआर 51 का कोई मतलब नहीं, बहुत पुराना हो गया ये. ये सब 61 पुराना हो गया. खातून 74. खातून में क्या है? इंडिविजुअल डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, वही है क्या जो जेल में पड़े हुए थे बेचारे? डेटनी कैन मेक अ रिप्रेजेंटेशन. हाँ 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 वही, मतलब 3-5 दिन के अंदर देना होता है कि ऐसा कुछ उसमें था कि हाँ 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 आपको ग्राउंड देना है तो 5 दिन टेक्निकल के है ये. अंदर. हाँ आउटर लिमिट का 5 दिन कर ले, अनटिल अनलेस यू एक्सप्लेन कि भाई डिले क्यों हो रहा है. ये है जी रिसेंट डेवलपमेंट. 42nd 44 अमेंडमेंट हो गया. सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस फॉर इमरजेंसी प्रोविजंस, ये कहाँ पे है? अच्छा क्या है? पुराने पुराने ये, मुझे लगता है ये सब डिजर्टेशन है बहुत इसका. पुराना है सर. हाँ ये पुराना है सर. ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पीआईएल वगैरह. अमेंडमेंट प्रोविजन क्या है ये? देयर हैव बीन सजेशन फॉर फर्दर अमेंडमेंट टू द बेसिक प्रोविजन टू एड्रेस टू द proposal include provision for नहीं judicial emergency नहीं proclamation. इसमें है कि टू इंश्योर दैट द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट आई मीन सस्पेंडेड arbitrarily sort of that. Technological advancement and their impact on emergency power have also been a subject of discussion. The emergence of digital surveillance sector. ये अच्छा ठीक है, साइबर क्राइम की बात कर रहे हो. Okay, 357 played a critical role in the recent Supreme Court. India has played a vital role in defining the scope of this. सब तो हो गया. रिसेंट डेवलपमेंट इन इमरजेंसी प्रोविजन, सब ठीक है, ये भी हो गया. 42nd ये हो गया. रिसेंट डेवलपमेंट इन इमरजेंसी प्रोविजन हैव स्पार्क्ड डिबेट ऑन द स्कोप एंड एक्शन. ठीक है. इमरजेंसी प्रोविजन देन प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर रिड्यूसिंग एक्शन. ठीक है ये वो. पढ़ देता हूँ. In conclusion, the emergency provisions in the Indian Constitution provide a framework for addressing extraordinary situations like war, external aggression, or internal threat. Or the judiciary has played a vital role in defining the contours of emergency powers and protecting fundamental rights during emergencies. Recent developments include amendments to enhance accountability and judicial review,
demonstrate the commitment to preserving democratic principles even in the time of crisis. It is imperative to strike a delicate balance between crisis management and the protection of individual rights, ensuring that emergency powers are used judiciously and in the best of interests of the nation. ठीक है सर. और इमरजेंसी आर्बिट्रली इम्पोज नहीं किया जा सकता, इसीलिए एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, एवरी गवर्नमेंट इज सॉर्ट ऑफ सर्कमस्पेक्ट. दर्शकों से निवेदन है कि भाई इनको पढ़ लें. यहाँ ये बहुत हुआ है, केशवानंद भारती जी 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 और ये दोनों पढ़ लें, ज्यादा जी, अच्छा रहेगा. वो उसी समय का है. चलो ठीक है, बंद करते हैं इसको हम. जी सर. अब हम लोग अब जाएंगे किसमें, हम उसमें चले जाएं, आईपीसी में कूदें नेक्स्ट टाइम. बोलिए सर. आईपीसी में कूदते हैं. जी जी. आईपीसी में वो करके फिर सीआरपीसी में चले जाएंगे फिर उधर से. हाँ जी. आईपीसी के ओनली इम्पोर्टेंट सेक्शंस पढ़ने हैं जो जी रिलेवेंट हैं. जी अभी पूरा जी आईपीसी जी पढ़ते हुए तो मेरे ख्याल में साल भर लग जाएंगे उसको, वो थोड़े नहीं. जो जैसे 120 बी है, कंस्पिरेसी की बात करता है, 34 की बात करता है, ऐसे ऐसे चीजें ना. जी जी जी. 302 है, 307, कॉमन इंटेंशन फिर. 420 है, इन चीजों को हाँ. लेकर. ओके, सो वी आर क्लोजिंग द स्ट्रीम. अगर आपको ये स्ट्रीम अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करें, और वीडियो कोई को लाइक सुझाव करें, हो तो हमें जरूर बताएं आप लोग. कमेंट करके बताएं, और कुछ कमेंट अगर करें, आपको लाइक लगे. करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें. नमस्कार, थैंक यू. नमस्कार.